माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आपको बुलेटिन भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people.
Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all round, all pervasive, and all inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans,
and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, नमस्ते। हम सब लोग आज बजट पे बात करेंगे, लेकिन चूंकि बजट शुरू हो गया है तो हम सब लोग हैं, जब बजट खत्म हो जाता है तो इस पे थोड़ा विश्लेषण कर लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या है। टेक्निकली तो ये वोट ऑन अकाउंट है। जो पुरानी परंपरा है उसमें केवल इंटरिम आप कैसा खर्चा करेंगे उस पे आप एक पार्लियामेंट से सैंक्शन लेते हैं। पुरानी परंपरा के अनुसार आपको कोई नई योजनाएं, नई वो इस तरह की
जो चीजें हैं वो आप बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि नई सरकार आएगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब देखिए मोदी जी क्या क्या करते हैं। And giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt trust-based administration with citizen first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT IFSC and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India, Middle East, Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others.
In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the Eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of
Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies. Unquote. To buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care, and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean,
and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with India is the world's largest milk producer, but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing थोड़ा नेट की शायद समस्या हो रही है, इसलिए हम हैं और लाइव तो हैं और लंबा भाषण हो रहा है। हालांकि अभी तक तो जैसा कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं है। जो स्पोर्ट्स की बात है वो प्रज्ञानंदा जी जो हमारे चेस में ग्रैंड मतलब वर्ल्ड नंबर 1 बनते बनते रह गए थे। अजय, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल। अब उनकी याद कर रहे हैं, अगर आज बजट में उससे कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साक्षी मलिक की भी याद कर लेनी चाहिए थी। अजय, प्रज्ञानंदा इज द हाईलाइट ऑफ दिस बजट एज फार एज द स्पोर्ट्स इज कंसर्न्ड। लोग वापस आ जाएंगे। आनंद, ये इंटरिम बजट है तो इसमें कोई खास एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है फाइनेंस मिनिस्टर के पास कुछ नया बोलने के लिए। बट अभी तक जो वो बोल रही हैं, मतलब वो वेस्ट ऑफ टाइम है। वो पूरा पैट ऑन द बैक चल रहा है कि हमने ये किया वो किया, और कहीं से भी कुछ भी आंकड़े मतलब वो वेरीफाई करने भी बैठेंगे तो बड़ी मुश्किल चीज है कि उनका डेटा कहाँ से आएगा। अब वो कह रहे हैं स्किल इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर लोगों को हमने स्किल दिए। मतलब मेरे हिसाब से जितने स्किल इंडिया सेंटर कम से कम मेरे इर्द गिर्द हैं जिन्होंने चलाए थे वो सारे बंद हो गए थे बहुत पहले ही। वहाँ पे कोई स्किलिंग नहीं चल रही है, वो फोटोशॉप के कोर्सेज बेचारे वो लोग चला रहे हैं इस वक्त। तो ये आंकड़े आप इस समय कुछ भी दे दीजिए और मतलब पब्लिक को सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन फिलहाल बजट में अभी तो कुछ आया नहीं है। आनंद। अच्छा अजय, यू आर राइट, स्कोप नहीं ज्यादा होता, यू आर राइट। नॉर्म भी है कि बिकॉज इट इज एन इंटरिम बजट, आप यू आर ओनली सीकिंग ऑथराइजेशन टू स्पेंड मनी फॉर द टिल द रेगुलर बजट इज अनाउंस्ड। लेकिन चूंकि इसके जस्ट बाद इलेक्शन होता है तो कुछ सॉप्स तो जरूर हर गवर्नमेंट अनाउंस करती है। पिछली बार पीयूष गोयल ने 5 साल पहले वो फार्मर्स के लिए और वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर उनके लिए सॉप्स वगैरह दिए थे। तो नॉर्म के अगेंस्ट जाके कुछ ना कुछ पॉपुलिस्ट मेजर तो जरूर बोलेंगे ये लोग। बाकी अभी देखिए फिस्कल डेफिसिट पे क्या बोलती है। अभी अगर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अगर सॉप इन्हें देना है तो वो एमएसपी लागू कर देना किसानों के लिए। एकदम से आप जो है उनका किसान सम्मान निधि हम ये कर रहे हैं और डीबीटी से इतना ट्रांसफर कर दिया, वो सब ठीक है, बट आपको किसानों को पैसा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप उनकी जो फसल है वो अंडर प्राइस में खरीद रहे हैं। तो वो एक तरह का कैशबैक मैकेनिज्म है जो शायद आत्मजीत सिंह साहब ज्यादा बेटर जानते हैं इस बारे में। तो अगर इन्हें इतनी चिंता है किसानों की तो आप एमएसपी जो वादे किए थे वो लागू कर दीजिए।
करेक्ट। मैं एक और चीज बोल दूं, टेक्निकली इट इज वोट ऑन अकाउंट, मतलब ये केवल आप अपने खर्चे का सैंक्शन पार्लियामेंट से ले लेते हैं, उसके अलावा आप कुछ नया कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मैं मतलब जितना इस सरकार को मैं समझता हूं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये मानेंगे नहीं। ये कुछ तो अगले ये 50 साल का जब कमिटमेंट कर दे रही है, अगला 2 महीना तो छोड़िए, ये सरकार तो अगले 50 साल 20 साल 25 साल कौन सा अमृत काल सबका कमिटमेंट कर देगी। लेट्स सी, आई मीन क्योंकि कुछ चीजें आई हैं जो बहुत ही हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, दर्शकों को अच्छा लगा, अमित शाह साहब बीच में बैठ गए थे बिल्कुल अपसेट के, मुझे लगा राजनाथ सिंह को उठा के बाहर ना कर दें जैसे नड्डा जी को एक बार किए थे, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हमें राजनाथ सिंह की फिक्र रहती है, हम सब लोग यूपी से हैं, ये चारों लोग जो बैठे हैं वी आर रूट्स इन यूपी, तो भाई राजनाथ सिंह को सहेज के रखिए, उनको धक्का ना देने पाए, हमें ऐसा लगता है कम से कम इस इलेक्शन तक, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मुझे एक जो इंटरेस्टिंग चीज देखने का सुनने का मन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड बढ़ रहा है हर साल, तो लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव द टारगेट कि फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक लिमिट करना है बाय 2026। सो बोथ आर अ लिटिल कॉन्ट्रडिक्टरी। क्या बोलती है ये देखना चाहता हूं मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सुधांशु, आई थिंक इन दैट डेट जो है, डज इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट और इज इट आउटसाइड द फिस्कल डेफिसिट? डेट हमारी डेट टू जीडीपी रेशियो अब 90% पहुंच गया है, तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा उधार ले रखा है, तो आई एम नॉट श्योर कि डेट इज अ पार्ट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। नहीं, डेट की सर्विसिंग तो आपको लेना ही पड़ेगा ना एक्सपेंडिचर में, डेट की सर्विसिंग तो एक्सपेंडिचर में आएगी ही। एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience, and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem
by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri-inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion US, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy. The Sleep Company brings you pure, innovative science in every mattress. This is India's only patented smart grid technology. It adapts and quietly readjusts to the shape. With new inspirations, new consciousness, new resolutions,
as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our kartavya kal. Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals
eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled,
or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development, and performance, effective delivery, and Jan Kalyan has given the government trust, confidence, and blessings of the people to realize whatever it takes. The goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication, and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. जी अजय प्रकाश जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा, इसमें कुछ था नहीं। उन्होंने अपने बारे में पैट ऑन द बैक जैसे मैंने कहा वो करते गए। बजट तो खैर है नहीं इसमें कुछ, और मेरे हिसाब से जो आंकड़े भी वो दे रही थी वो अपना हिसाब से दे रहे हैं। वो अब कितने सच हैं कितने झूठ हैं, अब आप 2014 से कहीं कंपेयर कर रहे हो, कहीं 2008 से कर रहे हैं, मतलब वो उसका कोई मतलब नहीं है इस तरह से कंपेयर करने का। तो कोई सही आंकड़े तो आए नहीं है इसमें, और लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आनंद वर्धन कह रहे थे शायद कुछ देंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इलेक्शन ईयर है, जनता वहीं की वहीं है, महंगाई उसी तरह है, महंगाई से लड़ने का कोई प्लान नहीं है, टैक्सेशन में कोई फर्क नहीं है, तो उतना ही टैक्स हम अगले साल देंगे, जीएसटी वगैरह उसी तरह से चलेगी। तो खासकर जो गरीब तबका है वो जो इस वक्त वो सफर कर रहा है, उसमें मेरे को कोई चेंज नजर नहीं आता है। जी मैं सुधांशु हम लोगों से बेटर इक्विप्ड है, बट मोटे तौर पे एक तो इट इज अ रिलीफ कि उन्होंने 1 घंटे से कम में छोड़ दिया। नहीं तो मुझे उम्मीद थी कि भाषण आज भी 1.5-2 घंटे का होगा, क्योंकि जल्दी ऐसा नहीं छोड़ते। इट्स अ गुड साइन। आतमजीत सिंह साहब आपके पास आऊं, मुझे 2 चीजें इसलिए मैं पूछ लूं। एक तो उन्होंने एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को, जिसको मतलब सुधांशु भी कह रहे थे, उस पर उन्होंने कहा है कि वैल्यू एडिशन के लिए दे हैव जनरेटेड 10 लाख एम्प्लॉयमेंट।
मतलब मैं भी गांव से आता हूँ, आप भी गांव का वो कर रहे हैं, आप तो आंदोलनी में। ये 10 लाख एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट हुए हैं? हाँ, किसी को पता है कि ऐसे मुंह हवा में कह दीजिए तो 10 लाख कह दीजिए, 10 करोड़ बोल दीजिए उस पर। डू यू हैव एनीथिंग टू सब्सटेंशिएट आतमजीत सिंह साहब? देखिए आनंदवर्धन जी, जो ये बजट आया है, एक तो इंटरिम बजट है जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया। इसके जो 2 पॉइंट्स हैं, एक मैक्रो पॉइंट है, एक माइक्रो पॉइंट है। आपने मुझसे माइक्रो पॉइंट पे सवाल किया। मैक्रो पॉइंट पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देश में आपका कर्जा 56 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। और आपकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट ही उसी से हो रहा है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो जहां का तहां खड़ा है। आपने देखा डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, सेंटर का हो स्टेट्स का हो, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स 17% पे खड़ा है जीडीपी के, जिसमें खाली मात्र 6% टैक्स डायरेक्ट टैक्स से आता है। कॉर्पोरेट्स को आपने 30% से 22% की कैटेगरी पे ले आए। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को आपने 15% पे कर दिया। न्यू मैन्युफैक्चरिंग आएगी, 15% पे टैक्स करेंगे। जो देश का 90% संसाधन 10% लोग लेके बैठे हैं, जिसमें 1 करोड़ लोगों के पास देश का 60% कैपिटल है, उनको तो आप 22% पे टैक्स कर रहे हैं। टोटल टैक्स रेवेन्यू का अगर आप देखें हिस्सा तो सिर्फ 2% बनता है। और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू आप 11% टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, जिसकी सीधी सीधी मार किसानों पे, मजदूरों पे, आम आदमी पे, मिडिल क्लास पे पड़ती है। क्योंकि इनकम टैक्स देने के बाद या एग्जम्पशन लेने के बाद जब आप बाजार में माल खरीदने जाते हैं तो कोई भी आइटम आपकी 18% जीएसटी से कम नहीं। आप पेंट ले लीजिए, आप मेडिकल इक्विपमेंट्स ले लीजिए, आप दवाइयां ले लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, 18% जीएसटी आपको देना ही देना है। जब आप 18% जीएसटी दे रहे हैं, उसके बाद आपको इनकम भी असेस करनी है, उसके बाद आपको जीएसटी की आपकी रिटर्न भी हर तिमाही में जाती है, तो आम आदमी को या गरीब आदमी को या मिडिल क्लास को पैसा बच कहां रहा है? भाई सैलरीड लोगों के लिए तो कोई रिलीफ नहीं इस बजट में मुझे सुनाई दिया, और प्रोफेशनल्स के लिए भी कोई ऐसी कोई चीज नई नहीं आई कि जो पुराने, मतलब पुरानी चीजों को ही नया जामा पहना दिया गया। अब आ जाते हैं माइक्रो लेवल पे। आपने किसानों की बात की। किसानों में किसान सम्मान जो योजना है, उसमें आपने देखा किस तरीके से जब स्कीम लॉन्च हुई थी तो 11.5 से 12 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पहले तिमाही में 2,000 रुपए की राशि गई। वो राशि कम होते होते 8 करोड़ 47 लाख किसानों पे ही रह गई, क्योंकि उसमें उन्होंने कह दिया कि इसमें डुप्लीकेसी ऑफ अकाउंट है, आधार से लिंक होना चाहिए, और उसके बाद वो उसमें अकाउंट जो है वो उनके आधार से लिंक नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। फिर उसमें तमाम तरीके की और फॉर्मेलिटीज डाल दी गई, जिसकी वजह से संख्या कम हुई। फिर आनंद फानन में पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने 33 लाख किसानों को और ऐड कर दिया उसमें। हमने 33 लाख किसान और ऐड कर दिए, पर यह नहीं बताया कि आपने 3.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि से बाहर निकाल दिया। तो ये मार्केटिंग का ही नहीं है, और तो और क्या है। अब जो मार्जिनल फार्मर्स को 11 करोड़ 80 लाख को फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस कुछ नहीं, कर्जा है। ये देश के किसानों की डिमांड है कि 2024-25 तक के सारे कर्जे और ऋण माफ होने चाहिए, क्योंकि हमें एमएसपी पे जो है खरीद का कानून नहीं है, तो हमारा शोषण होता है। जब हम फसल बेचने जाते हैं तो पहले ही बड़े धन्ना सेठ जो है इंपोर्ट करके ऑयल सीड और आपके दलहन तिलहन वो सब इंपोर्ट कर लेते हैं, तो मार्केट में रेट टूट जाता है। कॉटन में, कपास में आपने देखा किस तरीके से पिंक बॉल वर्म के चलते ना इंश्योरेंस क्लेम्स मिले, ना सरकार ने उसका कोई कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म दिया। सिमिलरली जो आप वेगरीज देखते हैं जो वेदर की, जिसमें अब आप देख रहे हैं कि बारिश हो या ठंड हो या गर्मी हो, या तो ये सारे सीजन्स जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है शिफ्ट हो गए हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट हुई है। पर कृषि किसानी का जो एग्रीकल्चरल बेस है उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो जब बारिश कम होगी तब भी नुकसान किसानों का है, बारिश ज्यादा होगी, ओले पड़ेंगे तब भी किसानों का नुकसान है। और मान लीजिए बीज अगर फॉल्टी पाए गए बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो वो भी उसका प्रॉब्लम है। और अब आपने देखा यूरिया में किस तरीके से जब वैश्विक रेट बढ़े तो डीएपी की बोरी को जब जो 45 किलो की 50 किलो की बोरी होती थी उसको 45 किलो का कर दिया। सिमिलरली न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो सीधी सीधी बड़ी कंपनियों को जाती है। उसका फायदा किसानों को इसलिए नहीं मिलता कि उसका प्राइस रेगुलेशन मैकेनिज्म है ही नहीं। आप चाहे वो एनपीके ले लें, चाहे वो 1236 ले लें, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल के लिए जिस तरीके से सरकार स्कीमें निकालती है, सॉइल हेल्थ के लिए हम काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो डायरेक्ट सब्सिडी जो है
वो टनेज के हिसाब से बड़ी कंपनियों को जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स उसका फायदा उनको नहीं पहुंचाते हैं। अब सरकार एक अध्यादेश लेके आई है या एक रूल लेके आई है कि अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी भी जो है उसका प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म सरकार करेगी, पर उसका कोई रोड मैप उन्होंने नहीं दिया, कैसे करेगी, कब करेगी, क्या करेगी। उसके बाद आपने कहा कि आप फूड प्रोसेसिंग में किसानों को असिस्ट करेंगे। पिछले 10 सालों में कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे, कहाँ लगे? आलू के फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया आपने, टमाटर के लगाए, आप टमाटर प्रोसेस कर रहे हैं, मशरूम प्रोसेस कर रहे हैं। आपने अभी तक किया क्या है? सरकार ने कहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को वित्तीय सहायता या उनको स्टैब्लिश करने के लिए कोऑपरेटिव्स बनाए हो या कोई ऐसा काम किया हो किसी तर्ज पे, तो उसका ब्यौरा अभी तक तो इस बजट में, क्योंकि ये मेडन स्पीच जो थी वो 1 घंटे की थी, इसमें नहीं दिया है। हो सकता है कोई खबर आए तो पता लगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट में जिस तरीके से 1361 मंडीज को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए 1,80,00,000 फार्मर लाभार्थी होंगे उन मंडीज के, तो जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 लाख करोड़ रुपए बताया गया। आप मुझे बताइए, किसान का मंडी गेट तक जाना और वहां पे बगैर कमीशन दिए माल तुलवाना और लाइन में 4-4, 5-5 दिन लगना और उसके बाद पेमेंट ना मिलना, ये एक रियलिटी है मंडीज की। और जब प्राइवेट मंडी कानून आया तो वो इसलिए आया कि सरकार कहती है एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की परचेज के लिए हम वो नहीं है, बाध्य नहीं है, और एजुकेशन अब प्राइवेट कर देंगे। हेल्थ बेनिफिट्स में आपको इंश्योरेंस दे दिया है, प्राइवेट इंश्योरेंस दे दिया है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पास करे ना करे वो हमारा सिरदर्द नहीं है। प्रीमियम 50% देना हमारा काम है, हमने वो अनुबंध कर लिया है। वो इंश्योरेंस की कॉस्ट एस्केलेट की जाती है और उसमें से वो 50% शेयर गवर्नमेंट का दिखाया जाता है। उसके बाद आपने देखा क्रॉप इंश्योरेंस में जिस तरीके से काम हो रहा है, उसी तरीके से जो हेल्थ कार्ड्स मिल रहे हैं, जो आयुष्मान भारत के नाम पे लूट है। सीएजी की खुद की रिपोर्ट है कि कितने सारे अकाउंट सिंगल फोन नंबर्स पे रजिस्टर हैं। इसका मतलब आयुष्मान भारत स्कीम और कुछ नहीं, एक छलावा है, एक जुमला है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा सरकार ने किया था। आज वो आपकी अग्निवीर स्कीम लाके 10,000 नौकरियां उन्होंने आर्मी की इमीडिएट रिक्रूटमेंट सालाना रुकवा दी। उन्होंने कोई ऐसा प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रमोट नहीं किया या पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं किया जिसमें जॉब्स जनरेट हो। तो जॉब्स तो जनरेट हुई नहीं। स्टेट लेवल पे भी आप देख लिए, शिक्षार्थियों की जो उनको पक्का करना था, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में लेके आना था, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल में काम करना, परमानेंट नहीं किया गया है। तो बहुत सारी, और पब्लिक हेल्थ वर्कर, सैनिटेशन, आंगनवाड़ी वर्कर को अगर आप इंश्योरेंस दे भी रहे हैं तो आप उनको पक्का कर दीजिए। आप उनको कह दीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं आज से, और 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन मिलेगी। यही डिमांड किसानों की है कि अगर 60 साल का किसान हो जाए तो किसान सम्मान निधि तब तक आप देंगे जब तक उसके पास जमीन रकबा है। जमीन रकबा उसके पास नहीं रहेगा और वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसको पेंशन कौन देगा? जी आदरणीय सिंह साहब, मेरे ख्याल में एक राउंड सब लोग का थोड़ा थोड़ा हो जाए इनपुट, फिर वी कैन टेक इट फर्दर। आप कंक्लूड कर लीजिए। बस मेरे को यही कहना था, आपने किसानों पे जो बात पूछी वो मैंने आपको बता दी कि जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वो सिर्फ ऑन पेपर हैं। जो किसानों की लंबित मांग है एमएसपी को देशव्यापी करना, और किसानों ने एक और डिमांड की है जिसके लिए वो 13 फरवरी दिल्ली कूच कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपने इंपोर्ट ही करना है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का और एक्सपोर्ट बैन करना है तो बगैर किसानों के से वार्ता किए, बगैर किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्फिडेंस में लिए आप कोई इंपोर्ट पॉलिसी और एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट पॉलिसी ना बनाए। अगले राउंड में मैं आपको जनधन अकाउंट की बात है, जिसमें ये गरीबों को 25 करोड़ गरीबों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं गरीबी से, और कह दिया कि हमने 25 करोड़ गरीब खत्म कर दिए हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। जी मैं एक जल्दी से सम अप कर दूं, क्योंकि फिर सुधांशु और अजय आप अपनी बात कहिए। जो मैंने मोटे तौर पे पकड़ा है, इन्होंने स्पोर्ट्स की बात की, प्रज्ञानंद की। इन्होंने कहा कि वुमेन को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया, मुद्रा लोन में 30 करोड़ और वुमेन ग्रामीण हाउसिंग में 70 करोड़, 70% जो ग्रामीण योजना है उसमें महिलाओं को दिया गया है। मुझे हरदम लगता है कि सब कहते रहिए, लेकिन कहीं साक्षी मलिक, कहीं अजय टेनी, कहीं हाथरस का भी जिक्र करते रहिए। इन्होंने एक नया टर्म बहुत नए लाए हैं सुधांशु। एक उन्होंने कहा इकोनॉमिक मैनेजमेंट में पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव बजट है। इट्स अ वेरी, कौन सा पीपल सेंट्रिक है? हाउसिंग की बात की। अच्छा, एक नया चीज है जो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, और अजय और सुधांशु मैं दोनों से चाहूंगा कि आप लोग इस पर रिएक्ट करिएगा, लिख लीजिए। वो बार बार कहते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज सेटअप करेंगे विद द करंट
एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल यूटिलिटीज। उसका नेट रिजल्ट ये होता है कि आपका जो करंट हॉस्पिटल है वहां पे जो सुविधाएं खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अब खत्म हो गए, सब चार्जेबल बेसिस पे है। तो आदमी को जो सस्ता मिलता था मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट होते ही वो सारी सुविधाएं खत्म हो जाती हैं। ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, नहीं समझ में आता है। एग्रीकल्चर की बात कर ली, रूफ सोलर प्लान की बात कर ली। रूफ सोलर प्लान तो तभी होगा जब आपके पास ऊपर छत हो। आयुष्मान भारत की बात कर रहे थे। एक आपसे स्पेसिफिकली सुधांशु, वो कह रहे हैं कि 4000 रेल बोगीज टू बी 40,000, माफ कीजिएगा, 40,000 रेल बोगीज टू बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। मुझे तो अभी ये लग रहा है कि एक चीज पे आपसे चाहूंगा कि बहुत बड़ी मांग थी कि भाई सीनियर सिटीजन का आप फिर से रिस्टोर कर लीजिए, जिसमें हमारे रेल मंत्री ने कहा था कि 7 कैटेगरीज है, क्या जरूरत है सीनियर सिटीजन को महंगे सेकंड क्लास में हवा खाते हुए जाइए। वो तो ये अप्रोच पे कुछ नहीं कहा गया है। एक वो नई बात कर रहे हैं 3 रेल कॉरिडोर, पीएम गति शक्ति प्लान। अब ये सब नाम सुनने में अच्छे लगते हैं, पर एंड ऑफ द डे क्या रेल अफोर्डेबल रह गई है या रेल महंगी हो गई है? मैं एक नया टर्म है ब्लू इकोनॉमी, अब वो मरीन और वो करके ब्लू इकोनॉमी बोल दीजिए। टूरिस्ट सेंटर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिजनेस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अरे भाई, ये ग्रामीण टूरिज्म को कब बढ़ावा मिलेगा? गांव का किसान कब घूमने जा सकता है? फॉर मिडिल क्लास वो टारगेट किए हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात। पोर्ट कनेक्टिविटी कर रहे हैं कि टूरिज्म टू बी प्रोवाइडेड इन आइलैंड। वो अब पोर्ट किसके पोर्ट हैं इस देश में, उसमें क्यों डेवलप किया जाएगा, कौन पैसा किया जाएगा, ये बहुत साफ है। एक नया टर्म लाए हैं, फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया, एफडीआई। इसका क्या मतलब होगा नहीं सुना। रोड मैप टू बी गिवन फॉर विकसित भारत। तो पिछले 10 साल से ये रोड मैप कौन सा था? अब ये जरा पूछने वाली बात होगी। मैं बाकी चीजों पे नहीं आ रहा हूं क्योंकि बाकी चीजें शायद टेक्निकल ज्यादा है। मोटे तौर पे सुधांशु, ओवरऑल बजट और स्पेसिफिकली जो रेल का वो बात कर रहे हैं कि 40,000 बोगीज को अप टू वंदे भारत। तो सबसे पहले तो जो आपने कहा कि जार्गन हैज बीन यूज्ड क्वाइट अ लॉट, रिटोरिक, और किसी भी स्कीम का खास इमीडिएट इम्पैक्ट और कितना क्या है वो कुछ समझ में नहीं आया। और शायद अब बजट स्पीड पूरी पढ़ेंगे तो शायद समझ में आए, लेकिन लगता है नहीं है कि है। देखिए, मैंने पहले जो कहा, ये जो इंटरिम बजट्स में 2 चीज देखने के लिए इंटरेस्टिंग रहती हैं कि चूंकि इलेक्शन भी होने वाला है तो क्या सॉप्स गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि वो देनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि इलेक्शन है इसलिए गवर्नमेंट वो फॉरवर्ड करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है तो बजट डेफिसिट पे क्या आपका इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसमें मैं पहले 2-4 जो चीजें अच्छी हैं वो बता दूं, फिर और चीजें पे बात करेंगे। एक तो जो सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर थ्रस्ट कंटिन्यू किया इन्होंने, और आप देख भी रहे हैं कि इन सब कंपनीज जो इन्वॉल्व हैं उनके शेयर प्राइस भी बढ़ रहे हैं। अब इस वक्त क्या हाल है पता नहीं। तो ये एक अच्छी चीज है, बिकॉज सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ थ्रस्ट जरूरी है, और इसमें थोड़ा और थ्रस्ट इन्होंने दिया, ये अच्छी बात है। एक और अच्छी बात है वो ये कि शायद 10% के करीब इन्होंने कैपेक्स बढ़ाया है। 11.11 करोड़ 10 पॉइंट समथिंग था शायद लास्ट ईयर। अगर हम वो जो स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया इन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन्स और अदर इंसेंटिव से, अगर उसको डिस्काउंट करें, सिर्फ डायरेक्ट कैपेक्स जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो उसमें 10% का शायद इजाफा है। और उसके बावजूद इन्होंने, जैसा अभी बता रहे हैं, हालांकि अभी पूरा एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पूरा तो नहीं है, वो एस्टिमेटेड ही है कि ये 5.9 को 5.8% पे ले आएंगे, और जो बजटेड किया है इन्होंने 5.1% डेफिसिट पे है। ये बाय एंड लार्ज एक डर था कि शायद डेफिसिट 5.9 तक भी ना आए, लेकिन अगर आ गई है तो ये अच्छी बात है। जो हर बजट में मेरी उम्मीद रहती है, और तमाम लोगों की, फार्मर्स की तो बात आतमजीत सिंह जी ने कर ली, तो मैं उसमें क्या खास नहीं बोल पाऊंगा, उनकी बात एकदम पसंद आई मुझे। लेकिन 3 चीजों पे, अगर ये अमृत काल और डेवलप्ड इंडिया होना है, और इंक्लूसिव वर्ड तो अब जिसको देखे वही यूज करता है। इंक्लूसिव तो एक ये चीज हो गई कि बिना इंक्लूसिव बोले कोई काम किसी का चलता नहीं है, चाहे कोई पार्टी हो। लेकिन 3 सेक्टर्स हैं जिसपे हर साल मुझे लगता है कि एक क्वांटम कोई चेंज आए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वांटम चेंज आया है, कई गुना बढ़ा दिया आपने, और वो है हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग। इसमें सब में इनकी स्कीम्स हैं, लेकिन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहां
2-3% होता था जीडीपी का, अब इन्होंने इस बार 3.4% पे आ गया है। तो ये क्वांटम जंप माना जाएगा। लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, हाउसिंग में आपकी स्कीम्स होंगी, लेकिन बजट नंबर्स देखना पड़ेगा, कोई क्वांटम जंप आता हमें नहीं दिखता। और जब तक इन सेक्टर्स में क्वांटम जंप नहीं आएगा, इसका इमीडिएट गेन नहीं है 1 साल 2 साल में, लेकिन अमृतकाल के हिसाब से अगर आप बोल रहे हैं तो इन पे अगर जब तक आप अपना स्पेंड नहीं बढ़ाएंगे, अपना इंटेंशन नहीं दिखाएंगे बजाय स्कीम्स बताने के इन टर्म्स ऑफ हार्ड नंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप जीडीपी कहीं भी बढ़ा लीजिए, लेकिन एक इंक्लूसिव ग्रोथ कंट्री की होने वाली है ऐसा मुझे नहीं लगता। आप देखिए आज जीडीपी हमारी बढ़ रही है, यू कैन सी इट इन एयरपोर्ट्स, मॉल एंड सम मे बी सम एक्सप्रेसवेज एंड सो ऑन, बट जो एक गरीब लोगों का एक जो नॉर्मल हमारे यहाँ पॉवर्टी लेवल दिखता है, उसका फील ऐसा कुछ कम हो गया हो ऐसा नहीं दिखता है। तो मेरा ये कहना था कि इस बजट से उम्मीद हर बजट में रहती है, इसमें भी थी। इन 3 सेक्टर्स में मुझे कोई भी क्वांटम जंप होता नहीं दिखाया। और इन 3 के अलावा एक और चीज है विच इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ इंडिया, और वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। In spite of all the PLI schemes and so many things and post-COVID incentives and so on, वो हम लोग अभी भी वही 15-16% ऑफ जीडीपी पे अटके हुए हैं, और बात करते हैं कि इसको 2025 तक 25% करने की बात थी। देखिए अब वो फिगर कोई बात नहीं करता, क्योंकि आप अभी भी वही 16-17% पे हैं। और उसके लिए पूरा इकोसिस्टम के लिए जो इंसेंटिव्स चाहिए, एक बैठ के इंडस्ट्री के साथ बात करके ऐसा किया जाए कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और हमारा सप्लाई चेन में हमारी भागीदारी बढ़े, ये मुझे ऐसा खुश नहीं लगा इसमें खास कुछ किया हो। रिन्यूएबल एनर्जी का मैंने बता दिया किया हो, लेकिन और फूड प्रोसेसिंग में आजकल फिनटेक जिसकी बहुत बात हो रही है, जिसमें इंडिया काफी आगे है, और बेसिक R&D जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा, इन चीजों पे कोई थ्रस्ट दिया हो इस बजट में मुझे नहीं दिखा। अब आपके सवाल पे आ जाता हूं। एक आपने वो रेल 40,000, आप देखिए रेल बजट जो है पहले एक बड़ी चीज होती थी, अब एक 4 लाइन में निपटा दिया जाता है रेल बजट को। ऐसा होना नहीं चाहिए। ओवरऑल जो रेलवे का बजट है पूरे लार्ज बजट के मुकाबले छोटा है, लेकिन आप मत भूलिए कि आप यही सरकार आपके इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड का 20 से 25% रेलवे में लगा रही है। तो रेलवे पे बात होनी जरूरी है जब आप इतना पैसे लगा रहे हैं। तो आप किसी बार एक अनाउंसमेंट करते हैं, जब आप 2 साल पहले आपने कहा 400 वंदे भारत 3 साल में आएंगी, तो चलिए 50 के करीब आ गई हैं, तो उसकी बात नहीं करना चाहते कि उसको, बिकॉज उसको पूरा स्क्वीज कर चुके हैं ये लोग। एयरपोर्ट टाइप स्टेशन की बात करते हैं, ये सब कोई मतलब नहीं है। आपको एवरेज स्पीड बढ़ानी है जिससे आपकी गुड्स और पैसेंजर दोनों फास्टर चले और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो। आपका गति शक्ति आपने इस लिहाज से लाए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट आते दिखता नहीं है, इसमें बात होना जरूरी था। तो मुझे लगता है चूंकि बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं आया, तो आपने एक ये शगुफा टाइप का है कि 40,000 कोच को आप वंदे भारत स्टैंडर्ड का बना देंगे। एज अ टेक्निकल पर्सन मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। ये 40,000 वो ICF कोचेज हैं, शायद 35,000 जो एक्सीडेंट होने में कैप्साइज कर जाती है, उलट जाती है, काफी लोग मर जाते हैं, उसको आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं। लेकिन आप एक शगुफा है कि वंदे भारत स्टैंडर्ड कर देंगे, भाई क्या कर देंगे, मेरी समझ में नहीं आया। जिससे बजाय इसके कि उनको रिप्लेस करें, तो ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। दूसरी छोटी चीजें जो एक अगेन ये इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड है, और आपने ही चालू की थी, मतलब सरकार ने चालू की थी पहले, सीनियर सिटीजन्स का कंसेशन का स्कीम। ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों हो गया है कि इसको सरकार वापस नहीं ला रही है, इतना डिमांड होने के बावजूद? पता नहीं, शायद सीनियर सिटीजन का वोट मैटर नहीं करता है या लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं तो बहुत पहले से कहता हूं कि इसको जब आपने पहले दिया तो वापस ले आना चाहिए। इस पे क्यों सरकार जिद में है मुझे नहीं समझ में आता। और जो आपने एक और बात कही कि ये एक गति शक्ति से ट्रेन का ऑपरेशन आप बढ़ा देंगे, ये भी अगेन इट्स अ जार्गन। आपको कुछ स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। इसके लिए आपको कन्फ्लिक्टिव मूवमेंट्स रोकने होंगे, बाईपासेस, फ्लाईओवर्स, डबलिंग ऑफ ट्रैक्स, ये सब करना होगा। इसमें पैसे की आपको कमी नहीं, आप लगा रहे हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप इसको जार्गन के अंदर छिपाते हैं, मैं तो ये कहूंगा। और लास्ट बात आपकी मेडिकल कॉलेज, बहुत सही कहा आपने। भाई हेल्थ आपको इंप्रूव करनी है
तो आप एग्जिस्टिंग सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलते जाएंगे, उससे कैसे काम होगा? आपका क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस सेक्टर में? और एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज बना देंगे, ये बात पूरी मुझे भी उतनी समझ में नहीं आती। मैं तो कह रहा हूँ इसमें क्वांटम जंप होना चाहिए। आप अपना इंटेंशन दिखाते हैं, आयुष्मान भारत जैसे जातमजीत सिंह जी ने कहा, मुझे ठीक से पता नहीं, उन्होंने बताया इसमें बहुत सारे स्कैम्स और वो मिसयूज फंड हो रहा है, तो ये बात भी समझ में नहीं आई। मैं यही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि बजट में मुझे एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ, ये सरकार का मेन काम है, इसके ऊपर कोई ऐसा क्वांटम जंप नहीं दिखता, और उसके बिना भारत इंक्लूसिव नहीं हो पाएगा। मैं जल्दी से सुधांशु आपसे, अजय आपके पास आने से मैं बहुत बेसिक चीज समझना चाहता हूँ। वंदे भारत स्टैंडर्ड के कोच होंगे। वंदे भारत जो मैं समझाऊं तो आप तो बनाए हैं, जनक हैं। वंदे भारत इज अ डिफरेंट कोच ऑल टुगेदर। उसकी अपनी पावर होती है, अपने अपने गति से चलता है। तो ये कोच और उस कोच का कोई मतलब नहीं है कुछ ये कहना कि हम ट्रेन को हवाई जहाज के स्टैंडर्ड का बनाएंगे। भाई हवाई जहाज हवा में उड़ता है, ये यहाँ चलती है। वंदे भारत का जो टोटल मैकेनिज्म है, जो एक एक कोच का, उसका और इसके मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन मुझे भी समझ में नहीं आया ये, क्योंकि एक नई तरह की ट्रेन बनी, उसमें देखिए वो परमानेंट कपलर है, तो वो उसमें अब क्रैश स्ट्रक्चर भी है, उसमें उतनी इंजरी होने की संभावना नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए तब भी। आप सारी कोच जो हैं उनको कर देंगे वंदे भारत स्टैंडर्ड का, टेक्निकली मेरी समझ में नहीं आया, इससे ज्यादा क्या मैं इस पे बोलूं। भाई आपके पास और रास्ते हैं, कवच है। आपने पिछले बजट नहीं, पिछले नहीं, 2022 में कहा था कि 2000 किलोमीटर में आप कवच लगाएंगे। देखिए ये बजट स्पीच में था, 4 लाइन थी रेलवे की, उसमें 1 लाइन ये थी, और अभी भी आपने उस 2000 में 1 किलोमीटर ऐड नहीं किया है। वो जो साउथ सेंट्रल में चल रहा है वही चल रहा है, तो आप उस पर अब बात नहीं करेंगे क्योंकि आप कर नहीं पाए। तो क्या बताया जाए इस बारे में? यही कि जो नहीं कर पाए उसको भूल जाओ, कुछ नया शगुफा छोड़ो, ऐसा लगता है। अजय आप एक ओवरऑल पिक्चर देने से पहले मेरे जो 2 बेसिक सवाल, आप क्योंकि एयरपोर्ट और पोर्ट पे काफी ध्यान रखते हैं, काफी उसको देखते रहते हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस भी, ये एयरपोर्ट कह रहे हैं हमने डबल कर दिए, उसका यूसेज भी तो जरा पता रहना चाहिए। कुशीनगर एयरपोर्ट कितना हो रहा है वहां? क्या वहां आप जगह नहीं मिलती है प्लेन खड़ा करने की? मतलब 2-3 साल पहले शुरू हुआ था, तो क्या वहां जहाज इतने ज्यादा आ गए कि अब जगह नहीं मिल रही? तो नया वो अयोध्या में एक शुरू हुआ है, उस दिन तो 180 या क्या 90 जहाज उतरे थे, चार्टर्ड थे। चार्टर्ड। मेरा सिर्फ कहना है कि ये जो एक आप खोलते जा रहे हैं, और दूसरा ये पोर्ट को जो डेवलप करेंगे, पोर्ट तो ज्यादातर पोर्ट तो प्राइवेट हाथों में, बाकी चीजों के अलावा इसमें भी जरा एक आपसे समझना चाहेंगे। जी 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 आनंद, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये एक केवल स्पीच थी और पैट ऑन द बैक था, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मैं स्पेसिफिक आपके जो क्वेश्चन है, एक तो एयरपोर्ट के बारे में, ये हमेशा से बीजेपी बोलती जा रही है कि हमने डबल कर दिए, अब 150 के करीब हो गए, पहले 70 थे। ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब आप भी ट्रैवल किए हैं, हम लोग भी किए हैं। 2014 में आपको भी पता है कितने एयरपोर्ट थे, हर स्टेट कैपिटल में एक एयरपोर्ट था लगभग, हर स्टेट में 4-5 एयरपोर्ट तो थे ही उस समय। तो ओवरऑल इंडिया में 100, 110, 120 एयरपोर्ट हमेशा से थे जहां पे फ्लाइट जाती थी। तो ये कहना हमने डबल कर दिए, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की अगर आप बात करें तो ये हैंडफुल हैं जो बने हैं। अगर पिछली सरकार जब मनमोहन सिंह की थी, बैंगलोर बना था, हैदराबाद बना था, ये ग्रीनफील्ड थे। बाकी उसके बाद ये कुशीनगर बना है, 2-3 और बने हैं, अब अयोध्या बना है। तो पिछले 6-7 साल में हार्डली, अगर आप टोटल नंबर लें तो 20 से 25 नए डेस्टिनेशन आए हैं। वो नए एयरपोर्ट्स नहीं है, उसमें कई तो पुराने एयरफील्ड्स थे, एग्जिस्टिंग एयरफील्ड्स थे, वहाँ फ्लाइंग क्लब्स वगैरह चलते थे, जैसे शोलापुर, कोल्हापुर, बेलगाम, ये सब जगह फ्लाइंग होती थी। अब इसको कमर्शियली आपने वहां पर एक डेस्टिनेशन कर दिया, तो ये एयरलाइन चलनी शुरू हो गई। अब दूसरा आप आ जाइए ट्रैफिक पर। अब एक तो आप छोटी जगह को जब जोड़ते हैं तो वहां पे आपका जो कस्टमर्स हैं या पैसेंजर्स हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी होती है। से आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, नांदेड़ और अकोला, ये दोनों एयरपोर्ट्स हैं। अकोला बंद हो गया है, वहां पे कभी ट्रैफिक शुरू ही नहीं हुआ उसमें।
नांदेड़ की फ्लाइट्स बंद हो गई, ट्रैफिक नहीं आता है वहां पे। तो लोकल जब तक पॉपुलेशन आपका पे नहीं करेगी, चाहे वो 2000 हो 2500, इसी रेंज के टिकट्स होते हैं, लेकिन वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा होता है। ट्रेन अगर वो पकड़ के चले जाएंगे तो शायद 200-300 रुपए में पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से आपने कुशीनगर पे मैंने पूरा एक आर्टिकल भी लिखा था। ये गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर है। वहां पे बनाने की क्या जरूरत थी नए एयरपोर्ट की? आप अच्छी सी एक कनेक्टिविटी दे देते, गोरखपुर से कुशीनगर कवर हो जाता। बड़े शहरों में हम लोग एयरपोर्ट से घर जब आते हैं तो मामूली बात है, मेरे घर से एयरपोर्ट 100 किलोमीटर के ऊपर है, तो हम लोग चले जाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी है, घंटे भर में पहुंच जाते हैं। तो ट्रैफिक अगर आप एनालाइज करेंगे, जितने भी नए एयरपोर्ट्स हैं वहां पे हमेशा ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है। छोटी एयरलाइंस हैं, एक स्टार करके चली है, आए दिन उसकी फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं क्योंकि पैसेंजर्स नहीं मिल पाते हैं उन्हें। और ये भी एक है, तो एक अनरिलायबिलिटी फैक्टर आ जाता है, आगे से लोग उसमें बुक करना छोड़ देते हैं। अभी कल ही वो झारखंड की कोई फ्लाइट थी दिल्ली से, वो फिर से कैंसिल हो गई। लोग कहते हैं हफ्ते में वो 4 दिन कैंसिल कर देते हैं। तो ये इश्यूज आएंगे। तो जब तक जैसे वंदे भारत में भी सुधांशु ने आर्टिकल लिखा था, कई जगह वहां पे पैसेंजर्स ही नहीं है, 30-40% ऑक्यूपेंसी पर चल रही है, जो लॉस मेकिंग है। तो ये लोग एनालाइज नहीं करते। आप एयरपोर्ट अनाउंस कर दीजिए, लेकिन वहां पे ट्रैफिक नहीं आता है, ना ही एयरलाइंस वहां पे वायबल हो पाती है। अब मैं सेकंड बात करूंगा, इन्होंने बीच में टूरिज्म की भी बात की है कि डोमेस्टिक टूरिज्म 1.5 करोड़ बढ़ गया है। पिछले साल हमारे यहाँ डोमेस्टिक टूरिज्म लगभग 15 करोड़ था, तो उसमें 1.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। अब वो 1.5 करोड़ वैसे 10% है। ये ग्रोथ हमारी हमेशा से डोमेस्टिक टूरिज्म की ग्रोथ अच्छी रही है। उन सालों में कम होती है जब कोई कैलामिटी हो जाती है, जैसे कोरोना हो गया या और कोई वजह से, बट डोमेस्टिक टूरिज्म यहाँ पे काफी स्टेबल है हमारे कंट्री में। इंटरनेशनल टूरिज्म की बात नहीं की, इंटरनेशनल टूरिज्म हमारे यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। पिछले साल केवल 1.1 करोड़ टूरिस्ट आए थे, तो इतने तेजी से नहीं बढ़ रहा है इंडिया। और ये कन्वेंशन सेंटर और ये सब की बात कर रहे हैं, वो देखने वाली बात है। वैसे थोड़े बहुत कन्वेंशन इंडिया में हमेशा से ही होते रहे हैं, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, इसमें होते आए हैं, बट कोई मेजर डेस्टिनेशन नहीं है अभी तक इंडिया जहां बहुत बड़े कोई कन्वेंशन होते रहे। फिर मैं एक बात करूंगा आपको जीडीपी के बारे में। जीडीपी ग्रोथ हम लोग बोलते रहते हैं 6, 6.5, 7 कुछ कितने %, और फलाने 2030 में हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। पिछले साल का जब मैंने एनालिसिस किया है, आपकी 5% के करीब 5.5% इन्फ्लेशन रहा है। आपका डॉलर जो है वो 10% आपका महंगा पड़ गया है। जो पहले 75 का था वो अब 83-84 रुपए पर। आपके इंपोर्ट्स महंगे हो गए, आपका डोमेस्टिक जितना भी मटेरियल है वो महंगा हो गया। जीएसटी इस वजह से आपकी बढ़ गई। जो जीएसटी कलेक्शन की आप बात करते हैं, जो हमने डबल कर दिया 2017 से, आप केवल इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए और इंपोर्ट्स जोड़ लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि नेट इंक्रीज हमारे यहाँ पे 2-2.5% से ज्यादा नहीं हो रही है। और इसीलिए जो हम लोग बोलते हैं कि के टाइप रिकवरी है, जो लोग अमीर हो रहे हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, खूब खर्च कर रहे हैं, गाड़ियां बिक रही हैं, हाई एंड गाड़ियां बिक रही हैं, लेकिन याद रखिए गाड़ियों पे 28% जीएसटी होती है। लेकिन जो गरीब है वो और इस दौरान गरीब होते रहे हैं। उसका आप देख ही रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अगर आप दे रहे हैं तो वो इकोनॉमी कहाँ से बढ़ रही है। तो यही 2 पॉइंट अभी इस राउंड में है आनंद जी। मुझे आत्मजीत सिंह साहब, एक आप हम लोग क्लोज इसलिए करेंगे कि अजय शाम को फिर से एक बार 5 से 6 इसमें बैठना है, तो उस समय जरा डिटेल भी समझ में आ जाएगा, अपने वो भी कर लेंगे। लेकिन आत्मजीत सिंह साहब, क्लोज करने से पहले आपसे एक चीज समझ लूं। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि 7 लाख तक नहीं लगेगा कोई टैक्स जनता जनार्दन के लिए, ये बड़ी भारी सौगात है क्या? अरे भाई, ये पिछला ही है, पहले भी 2 टैक्स रिजीम है, 5 लाख
पुराना टैक्स रिजीम 7 लाख, नया टैक्स रिजीम पिछले साल का है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब उसको वो फिर से कह दे रहे हैं और लोग उसको कह रहे हैं नहीं 7 लाख कर दिया, 7 लाख कर दिया। तो आतमजीत सिंह साहब एक ओवरऑल बहुत संक्षेप में, फिर शाम को हम लोग 5 से 6 कुछ और लोगों को ले आके उनसे भी पूछेंगे और समझेंगे। मतलब देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत से लोगों था कि चुनाव से पहले, लेकिन आई विल ऑल्सो थैंक मोदी जी कि उन्होंने कोई जिस तरह की वो कहते हैं ना, बोल देते हैं, जैसे राजस्थान में जैसा बताया जा रहा है कि अब बहुत सी चीजें बंद कर दी गई हैं जो पहले अशोक गहलोत सरकार में चल रहा था, तो कम से कम उन्होंने बंद करने का अनाउंसमेंट नहीं किया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आतमजीत सिंह साहब एक ओवरऑल बहुत संक्षेप में, बजट नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। जी जी, ये बजट जो है, जैसे आपने इंडियन एक्सप्रेस में मोदी जी का आर्टिकल पढ़ा था कर्पूरी ठाकुर पे, और बड़ी अच्छी अंग्रेजी आपने कहा उन्होंने लिखा है। ये बजट भी मुझे लगता है मोदी जी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। निर्मला सीतारमन ने तो उसको सिर्फ खाली लोकसभा में सुनाया है। अगर आप उसमें देखें, उसके प्रमुख अंग जो हैं, विकसित भारत 2047 तक, ये मोदी जी की जबानी है। सबका साथ सबका विकास ये बजट का मोटो है 2024-25 का, ये भी मोदी जी का ही दिया हुआ जुमला है। और जिस तरीके से जनधन अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को 54 लाख करोड़ रुपए का पीएम जनधन, 51 करोड़ लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया इस साल, और पिछले 10 साल की उपलब्धि बता रहे हैं 34 लाख करोड़ की। अगर जनधन अकाउंट में इतना पैसा गया तो फिर रूरल डिस्ट्रेस क्यों है, खरीदारी क्यों नहीं हो रही है? आप किसी भी कंपनी का आंकड़ा निकाल लें, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड है, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, उनके रेवेन्यू स्ट्रीम में या उनके फाइनेंशियल्स में वो सेल्स क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? जो पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें क्रेडिट असिस्टेंस दी गई 78 लाख स्ट्रीट वर्कर्स को, और जिसमें 2,30,000 करोड़ रुपए का जो अनुदान किया गया, वो उसका कलेक्शन क्या है? मुद्रा योजना में आपने कहा कि 15 से 18 लाख करोड़ रुपए दिया गया, उसमें कलेक्शन का क्या है? कितना डिफॉल्ट है? क्या वो लोग वापस आ रहे हैं? और एक और योजना, जनमन योजना, जिसमें आदिवासी और ट्राइबल्स को पुनर्स्थापित करने के लिए पीएम जनमन योजना इसलिए लागू की गई कि हसदेव के छत्तीसगढ़ में जंगल काट दो, राजस्थान में, उड़ीसा में, झारखंड में उनको ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दो और उनको फिर नए घर बना के दे दो, तो उसमें वो पीएम जनमन योजना हो जाएगी। जो पर्टिकुलरली वनरल ट्राइबल ग्रुप के ऊपर किया गया है, वो बेसिकली उनके जहां उनके जंगल हैं, जहां उनकी जमीन है, उस पर अतिक्रमण है। और पीएम विश्वकर्मा योजना, तो ये, और जो आयुष्मान भारत योजना है, हेल्थ केयर योजना, ये भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्थापित है। और जिस तरीके से एक बिगुल बजाया गया लोकसभा इलेक्शन 2024 का कि 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर हैं। अब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, उसके मापदंड क्या है, कितना उसको कम या ज्यादा किया गया है? क्या 80 करोड़ लोगों को राशन देने से 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर हो गए? हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहती है कि हम 111वें स्थान पर हैं। तो अगर आप ग्लोबल इंडिसेस पढ़ें तो आपको लगेगा कि भारत जो है वो डेवलपमेंट मॉडल पे नहीं जा रहा है, वो पॉवर्टी मॉडल पे जा रहा है। और अगर आप बजट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर का देखें, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी ही एक इलेक्शन कैंपेन को ही प्रचारित करता है, उसमें वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोग जो है अब गरीब नहीं रहेंगे, किसानों का भला होगा, 11 करोड़ 80 लाख लोगों को हमने बेनिफिट दिया, इंश्योरेंस जो है उसमें पीएम फसल बीमा योजना में लोगों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। तो इस तरीके की बातें जब ये सरकार करती है तो आप ये समझ जाते हैं कि ये सरकार जो फिगर्स दे रही है, एक तरफ तो वो कहती है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ कहती है कि हम बोरोइंग कम करेंगे। भाई 15.5 लाख करोड़ से आप 14 लाख करोड़ बोरोइंग कैसे कर लेंगे, जबकि आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो सिर्फ मात्र 2% से बढ़ रहा है। और जो काले धन की बात सरकार ने की थी डिमोनेटाइजेशन के बाद से, कि काला धन जो है मेन स्ट्रीम में आएगा, और जीएसटी को लागू करने का मूल कारण ही यही था कि सारी इकोनॉमी जो है वो फॉर्मल हो जाएगी और उससे टैक्स जो बेस है या टैक्स बेस वाइडर हो जाएगा, और कम से कम 27% रेवेन्यू जो है खाली टैक्स कलेक्शन से आएगा। ऐसा तो हुआ नहीं, और हमारा कर्जा जो है आज 205 लाख करोड़ रुपए पे है। तो जब अंकगणित किया जाता है तो देखा जाता है कि फायदा कितना है, नुकसान कितना है। तो मुझे तो पिछले 10 साल के बजट में जो सरकारी आंकड़े दिए गए हैं वो हकीकत से परे हैं, और गरीबी बढ़ रही है, बोरोइंग कंट्री की बढ़ रही है, और जो 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आने थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि 15-15 लाख हम लोगों को देने पड़ेंगे देश को बचाने के लिए। जी
आनंद वर्धन जी। मैं अभी यहाँ क्लोज करूंगा, क्योंकि वो जो आतमजीत सिंह साहब जिधर हिंट कर रहे थे कि जो हमारा हर बार डेट इंक्रीज होता जा रहा है, जो हम कर्जा लेते जा रहे हैं, उसका भी एक कैलकुलेशन है जिसमें अगर पर व्यक्ति वो कितना कर्जा हम लेते जा रहे हैं, कितना कर्जा हर व्यक्ति के सिर पे चढ़ गया है, तो उसकी कभी बात और करेंगे। शाम को 5 से 6 हम बजट पे बात करेंगे, सिर्फ बजट पे। लेकिन इस बीच एक बड़ी चीज हो गई है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। उस पर हम 1:30 बजे एक चर्चा कर रहे हैं। आप लोग के पास टाइम हो जाएगा तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी कल हुई है वो भी बहुत सी चीजों को इम्पैक्ट कर रही है। और मेरे ख्याल में आज पार्लियामेंट, चूंकि बजट था इसलिए पार्लियामेंट में शायद ये हंगामा नहीं हुआ होगा, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही में किसी भी तरह से एक चुने हुए व्यक्ति को जिस तरह से रोका जा रहा है, जिस तरह से सरकार रोक रही है, वो भी बात है। शाम को 5 से 6 उस समय बजट के स्पेसिफिक चीजों पे जरूर बात करने के लिए इकट्ठा होंगे। एनीथिंग टू ऐड? अदरवाइज अजय, वी विल क्लोज इट अप फॉर द नाउ। थैंक यू अजय, थैंक यू आतम, और सुधांशु अभी निकल गए हैं। सुधांशु आज थोड़ा क्योंकि रेल पे कुछ बोलने की बात है, हालांकि कुछ कहने को तो है नहीं बहुत कुछ। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।